Now, Shaheen Malik, an acid attack survivor, became the petitioner in a public interest litigation that brought her 2009 case to the attention of the Supreme Court of India. The SC took serious note of the fact that the trial in her case had been pending for over 16 years, which the bench led by the Chief Justice of India termed a national shame and a mockery of the legal system. And now, of course, viewers, let me get you some more details as far as this particular case is concerned. So we're talking about the Shaheen Malik acid attack case. That's, of course, a very disturbing visual, viewers, of her image, of her face, of course, after the acid attack. Now, attacked in 2009 at the age of 26, she was a student counselor at Punjab Technical University. She sustained third-degree burns on 90% of her face and her body. So very tragic, viewers. Of course, this is always heartbreaking to hear about. Now, the attack was planned by 4 people, including her colleagues and university students, and a juvenile was convicted in 2015, while the case against 3 others is still ongoing. So those are the details of this case. Now, the motive was envy over her achievements, her competence and her confidence. Look at that reason, viewers, to just ruin somebody's life like that. Now, she has been undergoing numerous surgeries and eye treatments for over 13 years. That is the result, viewers, of this very tragic story. Now, SC's observations are that such a long delay in concluding the trial reflects a shameful state of affairs. Of course, viewers, this is goes without saying. Now, the trial has not been completed since 2009. We will take suo motu cognizance. That is, of course, the Supreme Court's observations. In the national capital if the national capital cannot handle such a situation, then who will? This is such a shame. Absolutely, viewers, that is something that is really obvious, which the SC has, of course, observed. Now, we urge special courts or legal amendments to ensure swift justice for survivors. We direct Registrar General of all High Courts to furnish details of all pending trials in the matters of acid attack victims. All right, viewers. So, of course, we've given you all those details of this very, very disturbing story, and it's still unfortunate why this thing is even happening in this era. I, of course, have Sambhav Sharma joining me with more details. Sambhav, we're, of course, telling our viewers about Shaheen Malik's very disturbing case and the latest observations that the Supreme Court has made. What more can you tell us? Well, this case was listed in the court number 1 before the Chief Justice of India bench, Justice Surikant's bench, and it was item number 16 in the list. But it was taken on board as on the top, and Chief Justice of India personally heard the petitioner, and she argued at length in court number 1 of the Supreme Court before the Chief Justice of India, and she argued her matter in Hindi. The Supreme Court has allowed the petitioner to speak in Hindi, and at the top court, bench led by the Chief Justice of India made some scathing remarks here. The Chief Justice of India on one hand has asked all the Registrar Generals of all the High Court to come up with the details of all the trials going on in the country when it comes to acid attack survivors and acid attack victims cases. So the Registrar General will have to submit the report in the Supreme Court as to what is the stage of the trial in the respective states, in the respective High Courts. And on the other hand, Supreme Court has said that it's a shame on the system that in such incidents in the matter, this particular matter going on in one of the trial courts in Delhi, in the Rohini court, and the trial is not completed yet. This is 2009 case, and we are in 2025, and trial is not completed yet. It's a question mark on the system, and obviously, so the Supreme Court has issued notice and ask the trial proceed with the trials at a very faster pace. These such trials should go. The lower court, the trial court, should understand the gravity and fast track the case. Is what is said by the Chief Justice of India.
And there are certain other remarks as well, where what CJI has said. CJI has not just questioned the system, but also has appreciated the petitioner, that she came forward and she argued before the Supreme General of the High Court will submit all the details, all the data in the top court about this, about the cases going on when it comes to the acid attack survivor. And Solicitor General Tushar Mehta was also present in the Supreme Court when the matter was going on. He said that yes, I mean, such cases should be dealt very swiftly, and noted the gravity of this particular case, and said that we will also in a way cooperate what should be done at the end. I mean, if there is something which center needs to do something, then center will also take the certain action. So this was important story from the court number 1, where acid attack survivor argued her case herself before the Supreme Court, and Justice Surikant has questioned the system and said it's a shame on the system the trial has not completed yet, and asked that such trial should be held at very swift pace, at a very fast pace, and there should be fast track trials when it comes to these cases. All right, Sambhav, thanks for joining me with those details. And meanwhile, my colleague has spoken to Shaheen Bhatt, the survivor of the acid attack. Let's take a look. संभव शर्मा मेरे साथ एसिड अटैक सर्वाइवर मौजूद हैं, शाहीन मलिक। इनका आज सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एक तरह से सिस्टम पर सवाल उठाता है। शर्म की बात है कि 2009 से आपका ये मामला कोर्ट में चल रहा है, ट्रायल कोर्ट में, लोअर कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी तक फाइनल उसमें जजमेंट नहीं आया है। आपने खुद ये दलीलें कोर्ट के सामने रखी, हिंदी में आपने दलीलें रखी। आमतौर पे जो कोर्ट की कार्रवाई होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, वो अंग्रेजी में होती है, लेकिन मैम को कोर्ट ने अलाउ किया, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अलाउ किया, चीफ जस्टिस की बेंच ने अलाउ किया कि आप हिंदी में अपनी बात रखें। हमारे दर्शकों को बताएं मैम, आपने कोर्ट में क्या कहा? मैंने बताया कि 19 नवंबर 2009 को मेरे साथ एसिड अटैक हुआ था और 4 साल तक पुलिस ने कुछ नहीं किया था, जबकि मैंने बता दिया था कि किसने मेरे साथ एसिड अटैक किया है। और 2013 में डॉक्टर परमिंदर कौर जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थी, उनको मैंने कॉम्पनसेशन के लिए लेटर लिखा था कि क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल बहुत बर्डन आ रहा था, दवाइयाँ हज़ारों रुपये महीना की थी, सर्जरी लाखों रुपए की थी। तो तब उन्होंने मेरा केस देखा और उन्होंने कॉम्पनसेशन के लिए तो एप्लीकेशन मूव की ही, पर साथ में ही उन्होंने मेरे क्रिमिनल ट्रायल को भी रीओपन करवाया और वहाँ से मेरी लीगल बैटल शुरू हो गई। मतलब मुझे मकसद मिला ज़िंदगी में, उम्मीद मिली कि जुडिशरी बहुत पावरफुल है, और फिर तब से मैं अब तक अपना केस लड़ रही हूँ। पर ये अनफॉर्चुनेट है कि मुझे इतने साल लगे अपने केस को लड़ने में, पर साथ में ही मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आया कि मैंने दूसरे एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करना शुरू कर दिया। मैंने एक संस्था बनाई, ब्रेव सोल्स फाउंडेशन, जहाँ पर हम 300 से ज़्यादा एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करते हैं। 2016 में जब मैंने ये केस तो बहुत देखे कि चेहरे पर एसिड डाल दिया जाता है, आंखें ख़राब हो जाती हैं, मल्टीपल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है, वो तो हमने देखा ही, लेकिन फिर साथ में कुछ ऐसे केसेस आने लगे जिसमें एसिड पिला दिया जाता है। और इन केसेस में मैं ये कहूँगी कि एक जो चेहरे पर दिखता है वो उनका दिख नहीं पाता है। तो जो बेनिफिट एक एसिड अटैक सर्वाइवर को जिनके फेस पे टारगेट किया या बॉडी पे इंजरी है, उनको डिसेबिलिटी कैटेगरी में बेनिफिट दिया जाता है, लेकिन जो एसिड पिलाया जाता है उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता। उनको मिनिमम मुआवजा मिलता है 3 लाख, उनको कोई पेंशन नहीं मिलती, कोई सपोर्ट नहीं है, और उनकी हालत इतनी ख़राब है कि उनको हर महीने 2 महीने में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। उनकी सर्जरी कराई जाती है क्योंकि उनका जो फूड पाइप है डैमेज हो गया होता है, आर्टिफिशियल फूड पाइप उनका बनाया जाता है, उनको खाने में दिक्कत होती है, वो चल नहीं पाती हैं। आप खुद सोचिए कि एक लड़की जो 28 साल की है, उसका वज़न सिर्फ 20 किलो रह जाता है, वो कैसे चल पाएगी? तो मतलब वो तो अपनी फैमिली पे भी एक तरह का बोझ बन गई और उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो उनकी आवाज़ हम आज सुप्रीम कोर्ट तक लाए हैं, CJI के सामने रखी,
और मैं इस चीज़ में बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ कि मुझे बोलने का मौका मिला और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी और पॉजिटिव होप दी। नोटिस तो इशू किया ही, साथ में एक कदम आगे बढ़कर तमाम हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनसे कहा गया है कि आप बताएं कि एसिड अटैक के जो विक्टिम्स हैं उनका केस कहां पहुंचा, क्या स्थिति है, ट्रायल का क्या कंडीशन है। एक बड़ा दिशा निर्देश यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहूँगी कि हमें इसी तरह की जजेस की ज़रूरत है, इसी तरह जस्टिस जो कि इन मुद्दों को सीरियसली ले। तो आज ये लिया गया, इस पर मैं बहुत खुश हूँ। होपफुली इसमें पॉजिटिव जजमेंट आएगा और हम आगे भी और एसिड अटैक सर्वाइवर के और मुद्दे भी हम इस स्कोप में लाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। तो यहाँ पर एक एसिड अटैक सर्वाइवर की कहानी और उन्होंने स्वयं अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। दिल्ली हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स जो हैं देश की, उनके रजिस्ट्रार जनरल को कहा गया है कि वो डिटेल में बताएं कि ट्रायल किस स्टेज पर चल रहा है। आप वो जानकारी जब आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे और उसके बाद आगे जो हियरिंग होगी वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी। या इसमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट एसिड अटैक सर्वाइवर्स और विक्टिम्स के बारे में क्या कहता है।